कॉफी शॉप में एंटर करते ही बरिस्ता आपसे लॉन्ग लिस्ट ऑफ मिल्क शेयर करते हैं। काउ मिल्क, आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, ओट मिल्क, और ये सारे ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग है कि आज हमें पता ही नहीं है कि अच्छा क्वालिटी मिल्क कौन सा है और कौन सा मिल्क है जो आपकी बॉडी को सूट करता है। अबाउट 70% ऑफ द एडल्ट्स आर एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंट, एंड लैक्टोज इज द कंटेंट दैट इज फाउंड इन काउ मिल्क, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में लैक्टेज होना जरूरी है, जो कि आफ्टर अ सर्टेन एज, जो बहुत ही अर्ली एज के किड्स होते हैं, उसके बाद में हमारी बॉडी में बनना ही बंद हो जाता है। सो एज एन एडल्ट आप में कहीं ना कहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस है। सम पीपल आर कंप्लीटली लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड सम पीपल कैन डू, बट दे ऑल्सो फील अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्लोटिंग or gastric issues after consuming cow milk. So if you are facing issues like gastric or bloating after having milk, you have to stop drinking large portions of milk, and I'm telling you that even very small portions of milk can cause all these issues. So if you are facing them, stop using cow milk or switch to a better option. Now what are actually the better options here? One is that if you can switch to organic A2 cow milk, that will be better. But if you are lactose intolerant, completely lactose intolerant, then even A2 milk will not come of any benefit to you. Now coming to almond milk or walnut milk, these nut milks are really good for you, but since these milks are coming in tetra packs, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एडिटिव्स होते हैं टू इंक्रीज इट शेल्फ लाइफ. इफ यू कैन मेक दीज नट मिल्क्स एट होम, nothing like it, but definitely these milks are gonna cost you a lot, so choose wisely. Coconut milk and soy milk can be actually better alternatives, but then again be aware that they also come in the packaged tetra packs, so kahin na kahin thoda preservative rahega, so be careful with that. If you can make these at home, and I think at least coconut milk to ghar mein banaya ja sakta hai, if you can do that, nothing like it. Coming to the worst of this entire category is oat milk. It's a grain milk. Oat milk mein only thing that you get is lots of carbs. There is no protein, there is actually no good fats either, so please avoid oats milk. But other milks you can try, but always make sure that your quantity is small, and then if you are making it at home, it's lot better than buying the packaged milks.